Good afternoon, everyone. Thank you for joining in. Today we will be discussing on tea processing and what are the different technology and clean energy related solutions that we can adopt for tea processing. We have a lineup of speakers today. We will be having Swati ma'am, who will take us through the entire tea value chain and processing that is required for it. Then we will have an end user who will interact with us, actually speak about their business and how they're going about it. Then we also have a technology innovator who will tell us about how the technology is working, how they are sort of running it based on their business as well. Um, Post that, we will be talking about the cash flows and the business model related to the solutions. Everybody participating in the webinar will be shared all the resources that we are taking you through today over email once the webinar is done. And I will request everybody to add their questions in the chat box as well. Um, yes. Yes, we will just get started. Swati ma'am, over to you. Happy to have you. Yeah, thanks. You can hear me? Yeah, Yes. yeah, okay. While tea is a very large sector, what we in SELCO Foundation are com working on and committed to are the small tea growers. Uh, and there are about 2,000 small tea growers in India. And this small tea grower is of a recent origin, maybe about not more than 10 years, while the tea industry in India is more than 100 years old. This focus on small tea growers is very important because not many interventions, innovations, etc., have happened for them. You know, and they are today contributing more than half of all the tea that is grown and processed in India. So typically, the land holding of the small tea grower is just about 1 to 2 hectares maximum, and given the climate change impacts of climate change, uh, we will, what happens is that the leaf yield is shrinking, and from these small tea growing holdings, you get and even if your tea yield is low, and you cannot survive these multi growers with small land holdings and the erratic price of fresh tea leaves. And so this sector, I would say, is in a bit of a distress. Yeah, go ahead. Next slide, Sneha. Uh, so there are different types of tea produced. I think white and oolong is very uh, sort of very elite kind of teas, and these are made out of just the buds, etc. Production is very low. So in our innovation or research or interventions, we don't look at white tea and oolong tea. Black tea is typically, or while orthodox tea is also black, what people refer to as black tea is mostly the CTC tea, which is chai. Typically, we people say CTC black tea is chai, and the rest of it is all tea. So the small tea growers typically produce white tea oolong more for their own consumption and a little bit against specific orders, but largely they are making green tea and orthodox tea. Yeah, next. The electrical and the thermal requirements of tea making is very large, but we will come to that. The processing of teas, we will just limit ourselves to green and orthodox. Tea plucking is common across both sectors. Withering is more often done for orthodox, hardly at all, at least for green tea. And the best processing practices do not recommend that you wither green tea. Then the green tea is subject to either two different other processes. It's either pan fried or it is steamed.
I think one steaming, I think, is the Japanese style, and pan frying is the Chinese style of tea processing. Uh, it does not go through the fermentation route, because the moment the fermentation happens, then it goes into the black stage, etc. So after rolling or steaming, it goes after pan frying and steaming, it goes straight to the rolling. It could be hand rolled or it could be machine rolled. It all depends upon the orders. Typically, hand rolling gets you a better price, but machine rolling is faster and you would save on your labor costs. Uh, and then it goes for drying, grading, and packaging. The critical issues in the where while the small tea growers are suffering in when they transition to mini tea factories is because there is not equipment has not been designed for such small capacity of production. Normally, tea is produced in tons per day, and if you're talking of 8-10 kgs per day, then there is no innovation, there is no intervention, there is no equipment, and that is where this intervention has Selco Foundation has intervened, mostly uh, with the tea dryers and with solarization of the facility, because these were the two crisis areas: unscheduled power cuts and tea, if in the middle of processing, if there's a power cut, then the whole batch is lost. And if the tea We're is not not able to dried. hear you. I think we missed the last Okay, can you one hear me point that now? you. Can you hear? Yes, yes. Yeah. So the major thing is that there is innovation which is lacking in the tea sector, especially for mini tea factories. And this is the intervention that we have chosen to address, which will make a qualitative change in the life of the small tea growers who necessarily have to transition to mini tea factories, because the price that they get from just plucking and selling leaves is not remunerative. So there was one way of addressing is the unscheduled power cuts, which results in the entire batch getting lost quite often. So that can be addressed by solar technology. But there was a gap in the drying. Tea drying and the quality of tea is largely determined by the kind of drying that happens. And if your tea drying is not good, then the price of your tea falls rapidly. And there were no dryers that were available. Some of these uh, tea equipment suppliers doing were supplying, you could say, LPG fired dryers or electric dryers, but then the cost of drying was becoming prohibitively very high. So a biomass fired dryer with solar uh, solar power for specific needs was the intervention that we have developed out here. So the solar cum biomass dryer that we have used uh, is an innovation. The thermal heat is supplied by biomass, and the power that is required for rotating the trays, which will get you uniform temperature, and for blowing hot air into the chamber is taken care of by solar. So these tech specs are all out here. I think this is a very efficient dryer, more efficient than any dryer that I have come across in terms of thermal efficiency. Yeah, I think that's about next. Uh, Yes, you want here me to continue? Yeah, I'll yeah. request Kakoli. Thanks, ma'am, so much to taking us through the process. I'll now request Kakoli to come in with our end user who can give their experience of how they are running this livelihood as well. Hi, Sneha. Thank you. So, our end user is trying to connect. He is somehow not being able to connect. He is again trying. If we can further proceed with the vendor and then come back again Kakoli, with. are you able to hear us? Yes, yes. Can you hear me? No, we are not able to hear you in case you are talking. Can you hear me now?
हेलो। Can you hear me, Sneha? Because in the chat box, some people are saying they can hear us. Yes, 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 we can. Yes, yes. Sorry, go So, on. yeah, sorry, our end user, he is actually trying to rejoin. He got dropped off. Can we go with the innovator and then come back again with the end user? Yes. Sure, sure. Thank you. Nilotpal. Yes. Yes, hi. Hi. Good afternoon, everyone. We have GoGo Innovation from Dibrugarh, Assam, who has actually helped us developing the dryer and helped us throughout the whole phase of while developing the dryer and making into a final product. So we welcome GoGo Innovation के तरफ से हम लोग ये नीलोत्पल गोगोई who is the proprietor and ओनर है नीलोत्पल गोगोई नीलोत्पल दा हम्म, थोड़ा आपका अगर बैकग्राउंड क्या है, आप क्या क्या प्रोडक्ट में काम करते हैं, वो थोड़ा हमारे पार्टिसिपेंट्स को अगर एक्सप्लेन कर पाएंगे तो इंट्रोडक्शन की तरफ से। हाँ। बेसिकली हम तो ज़्यादातर आपका टी प्रोसेसिंग मशीनरीज के लिए ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे जो मतलब स्मॉल फार्मर्स है उनको हम रोलिंग टेबल्स मतलब टी ड्रायर्स एंड आपका अप टू फ्रॉम आपका 50 kg टू 2500 kg टू 3000 kg तक किसी को यूनिट चाहिए तो हम यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपका 2007 से इस काम के मतलब काम में बिजी मतलब लगे हुए हैं और अभी तक कम से कम हमारा 200 प्लस मतलब स्मॉल ट्री ग्रोअर्स है जो मतलब हमसे मशीन लिया है। तो इसी काम के रिगार्डिंग हम मतलब किया हुआ है। एंड 2019 में हमारे फादर जो है उनको टी स्टीमर के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। एंड आपका रेसिप्रोकेटिंग ड्रायर में हमें पेटेंट भी है एंड स्टीमर भी पेटेंट है। ओके, थैंक यू। हाँ। और सिंस आप लोग मतलब पूरे टी सेक्टर में ही काम करते हैं और आप लोगों का हाँ। स्पेशलाइजेशन भी टी सेक्टर में ही है, ये जो ड्रायर हमने आपके साथ मिलके बनाया था या फिर जो इनोवेशन एक ड्रायर के ऊपर हुआ है, आप ये हम्म। इनोवेशन टी फैक्ट्रीज के लिए कैसे विजुअलाइज करते हैं इन द कमिंग डेज, और लाइक ये कैसे जो मिनी टी ग्रोअर्स है उनको सपोर्ट कर पाएंगे? हाँ मतलब क्या है कि इस मतलब ऐसा ड्रायर तो हमने मतलब पहले तो ड्राइंग हमने बनाया है लेकिन ये बहुत लो कॉस्ट में मतलब स्मॉल फार्मर्स के यूज के रिगार्डिंग मतलब ये बना हुआ एक ड्रायर है जो मतलब एफोर्ड कर सकते हैं मतलब स्मॉल फार्मर्स ये ड्रायर। और हायर एफिशिएंसी होने के कारण बहुत फायदा भी है, उनका फ्यूल कॉस्ट भी बहुत कम होगा। एंड क्वालिटीज के रिगार्डिंग हम बोलेंगे तो बहुत अच्छा क्वालिटी इसमें हमें मिला है। और इसमें और भी काम मतलब कर सकते हैं मतलब अदर प्रोडक्ट्स भी हम ड्राई कर सकते हैं मतलब ओनली टी नहीं, हम पेपर हो गया आपका गोस्ट पेपर हो गया, ये सब भी हम जिंजर्स वगैरह भी इसमें हम ड्राई कर सकते हैं। ये फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये, मतलब प्राइस के रिगार्डिंग भी क्वालिटीज के रिगार्डिंग भी एंड एवरी पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा बेटर ये ड्रायर है। ओके। और जब हम लोग टी सेक्टर को देखते हैं, आपके वहाँ पे कैसे एंड यूजर टाइपोलॉजी के लोग आते हैं? कि मिनी टी फैक्ट्री के लोग आपके पास ज्यादा आते हैं या फिर कौन सा कस्टमर टाइपोलॉजी आपके वहाँ पे ज्यादा आते हैं, और उनका रिक्वायरमेंट कैसा होता है टी सेक्टर का? टी सेक्टर का मेन हाँ एक्चुअली हम जो फार्मर्स को मशीनरीज दिया है वो 200 kg से कम जो मतलब डेली प्रोडक्शन करते हैं वैसा कस्टमर्स ज्यादा है, वैसा मतलब फार्मर्स ज्यादा है। 200 kg से मतलब कम करते हैं वो लोग।
एंड जो आपका बड़ा फैक्ट्री वाला हो गया वो 25 to 3000 kg वाला, तो वो हमने कम से कम आपका 40 to 30 यूनिट्स जैसा ऐसा दिया है। बाकी सब तो स्मॉल फार्मर्स ही है यहाँ पर। ओके। मतलब वो भी और फार्मर्स यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, मतलब टी के रिगार्डिंग उनको मतलब ड्रायर का इशू रहता है, ड्राइंग का, प्रोसेसिंग का भी इशू रहता है, रोलिंग टेबल्स का भी इशू रहता है, लेबर्स नहीं मिलता है, तो वो सब भी इशू रहता है। लेकिन ये सिस्टम आने से मतलब हेल्प होगा उनको। ओके ओके, थैंक यू। और एक लास्ट क्वेश्चन था, ये जो ड्रायर है, अगर हमको लॉन्ग लॉन्ग रन में देखना है तो ड्रायर का कैसा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो सकता है? अगर मेंटेनेंस का कुछ है तो वो कैसा होगा? अगर कुछ एंड यूजर को स्पेशली देखना होता है कि इस पार्ट को अच्छे से हैंडल करना होता है, या फिर इसको रेगुलर मेंटेनेंस का रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, तो वो कौन कौन से टॉपिक पे ये एंड यूजर को देखना होगा? ये आपका हम जो ड्रायर बनाया है उसमें आपका जो फायरिंग चैम्बर है और जो पाइप्स वगैरह है उनको तो साफ करते रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बन बैठ जाएगा। एंड जो पाइप्स होगा वो आपका मैक्सिमम 4 to 5 years तक वो मतलब लास्टिंग करेगा हमारे मतलब हम जो अभी तक जितना ड्रायर बना है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो वो पाइप्स हमें मतलब चेंज करना पड़ेगा, वो चेंजेबल है, वो नीचे से भी ऊपर से भी हम काट के निकाल के वो उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, मतलब हमारा हमने डिजाइन ही मतलब इतना इजी किया है कि वो बहुत अच्छे से वो मतलब मेंटेनेंस भी कर पाएगा। और जो बेरिंग्स वगैरह होगा उसमें तो मतलब साल में एक बार ग्रीसिंग करने से वो चलता ही रहेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके ओके। हम्म। और लास्ट और एक क्वेश्चन था, स्पेशली हमारे जो चैंपियन है जो अभी ये ड्रायर यूज कर रहे थे, सो जो ये रेटेड रन टाइम है वो आपके हिसाब से कितना हो सकता है ड्रायर का? क्या बोले, रिपीट करेंगे? जो रन टाइम है ड्रायर का, एक दिन में कितना घंटा ये ड्रायर हमारे एंड यूजर्स यूज कर पाएंगे? मतलब अगर सोलर में चलाना नहीं चाहे तो 24 आवर्स वो चला सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नीलोत्पल जी, आप कॉल में रहिए, लास्ट तक रहिए। देयर माइट बी फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स जो आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे। थैंक यू सो हम्म। मच फॉर ज्वाइनिंग। स्नेहा, again, if I have to come back on our champion end user, Mr. Sailen Fukan, who is from Tinkhang, Dibrugarh, he is not being able to join, but we can connect to him over the phone, and I can put my phone on speaker and have the interaction on his experience on the dryer. So I'll just connect with him and then I'll put my phone on speaker.
So our end user have been able to join. He just confirmed, and he is switching on his video, and we will start interacting. Soilinda, আপুনি মিউট হৈ আছে, আনমিউট কৰিব লাগিব। শৈলেন্দ্ৰ শুনা পাইছে? হেল্ল', শৈলেন্দ্ৰ আপোনাৰ ভইচটো নাই আহা। I think, Sneha, we can do the end user segment in the last bit of this webinar. He is still struggling, and we can continue after the business model and everything, and then we can hear from our champion end user. Sure, sure. I'd like to invite Supriya to take us through the business model. Hello everyone, my name is Supriya and I'll walk you through the business model. So, just to give you a gist of the contents, I'll first discuss about the types of end users. And second, we'll discuss about the technical and the operational specifications of the dryer. Third, being the impact of the biomass dryer. We'll compare the pre and the post intervention. And then finally, we'll move on to the business model. So I just want to add this point that there can be different types of end users. The first one being the end user can have his own land where he is growing the leaves. It can be organic or inorganic. And he can also own the factory where he is processing leaves from his own land into the made tea. And second case would be that the end user can procure the leaves from the nearby estates or small tea growers and then process these leaves into the made. So the technical and operational details of this particular biomass dryer, before I begin with this slide, I want to add this critical point that the design, the specifications can vary with different end users. Also, the production capacity or the selling price of your made tea can vary from one end user to different end user because it majorly depends on the market linkages and his sales channel, whether it is B2B, B2C, or a combination of both. And the kind of leaves that he's procuring or he's growing also makes a huge difference, whether they are organic or inorganic. And with respect to that, the selling price varies. Moving on, like Kakoli earlier mentioned, the end user is Mr. Solim. So I have taken his particular case and I have prepared this business model. So this is what he conveyed is that the tray capacity in his biomass dryer takes up about 1.5 kg of fresh leaves, and the number of trays are 8 in numbers, and fresh leaves per batch is almost 12 kg per batch, that is 1.5 into 8, and batches per day that he is processing approximately accounts for about 4 numbers in a day. And the influx of the fresh leaves per day that he processes is 45 kg per day, and the drying time being 70 minutes. So here there is a preheating that is happening bit of 20 minutes followed by 50 minutes of proper drying. Now, like I said, the dryer's efficiency also might vary because every dryer might take different amount of time required for preheating. Some might take 20 minutes, some might take even 40 minutes. So the machine runtime is about 4 to 5 hours per day, and the working days that he works for or his laborers also work for are 26 days in a month. And the fresh leaves processed per month is
about 1170 kgs per month, and annually it is roughly about 9500. Now the conversion ratio, that is the fresh leaves have got very high moisture content. So for example, if you take 5 kg of fresh leaves, the yield will be just 1 kg of made tea. So then that would be a 20% conversion rate. So amount of made tea per annum would be 1800 kgs per annum. Next. So the end user also told that earlier in his previous biomass dryer, where there was uneven heating and the drying wasn't that efficient. So there was almost 2 to 3% of wastage of the annual production. Now 2 to 3% might seem very minimal in number when we hear, but it accounts for 75 kg per year. Then again, 75 kg per year sounds a little lesser number, but then when you look at his selling price, it almost accounts for about 1 lakh rupees of loss per year. So it's quite a big number, and now the post intervention there is no wastage, so the quality of leaves are retained well. Coming to the major crux of this biomass dryer is that it requires a lot of fuel. So the firewood that he used earlier in the previous biomass dryer was 60 kg per batch, and now it is substantially low, that is 10 kg per batch. So if you look at the annual numbers, it was earlier it was 46,800, and now it is just 3,500. That is almost 92% of reduction happened. So the capex of the current biomass dryer that our end user using is 2,25,000. If in case any other end user procures this kind of biomass dryer and goes and does a 20% down payment, that would be for 45,000, and the remaining 80% he can obtain a loan of 80%, that is 1,80,000, with an interest rate of 12% and a tenure of 60 months, that is 5 years. His EMI would be 4,004 rupees per month, and annually it would be around 50,000. Now, if you look at the selling price for orthodox tea and green tea, so orthodox tea, again, there are varied kind of orthodox tea that he also sells. But he also mentioned that the orthodox tea that he produces accounts for 80% of his annual kgs per year of made tea. So, and green tea is just 20%. So the major income is from the orthodox tea. So the selling price here would be higher when you compare with different end users. That is, like I said, so this end user has got really good sales channel and market linkages. And in addition, he also, the leaves that he procures from his own land is organic leaves. And there is also a different mechanism involved with respect to rolling. So there is something called as hand rolled and machine rolled. So hand rolled requires a lot of skill and more labors are required because it's a manual process, and that is the reason why he has got a higher selling price. Now, if you look at the operational cost, human resource, the labor cost is still the same because the hand rolling hasn't been changed. So the number of labors that he had earlier and now is the same. However, the raw material cost, if you look at it, accounts for the firewood cost. So there is huge difference in the firewood raw material cost. Electricity, so his factory is solar powered. So the fans that he used during the drying process, that is the withering process, that is now that has got solar intervention. So the electricity earlier was 7,000 per month, and now it is just 1,000 per month. Packaging, he told me that he has got 10 kg packet, 50 gram of packet, and 100 gram of packet. And the numbers also vary. Although the 10 kg packets are less in number, about 150 in a year that he procures. So the packaging cost here is high because this is what he told, with the packets what that he procures from a particular vendor at his area. So that vendor has got his own monopoly and he charges a little higher, and there is also, and he also labels it and gives that is at the both the side, the front and the back of the packet, and that is why the cost here for packaging is little high. However, he does incurs
all the expenses through his good sales. So the total operating cost pre-intervention is about 15 lakhs and post-intervention is about 13 lakhs. So the saved expense is almost about 2 lakhs. Now the revenue before and after, there is just a difference of 2 lakh, and that 2 lakh is usually it is accounted for your 2 to 3% of wastage happening annually, and expense like I mentioned earlier, there is difference of 2 lakh again, and the operating profit earlier was about 5 lakh and now it is about 9 lakh. So the incremental benefit is about roughly about 4 lakh. So, EMI per year, like I said, would be about 50,000, and the net profit is about 8 lakh, 8.5 lakh, or 9 lakh. The break-even production, if in case he does, if there's a position where he neither gains loss nor he neither makes a profit nor a loss, that can happen in case of seasonal variations or so. In that case, he has to make a production of 98 kg per month, and the payback period with this particular loan tenure could be roughly about 10 months. Over to so I would request Nitiraj from the Assam team to explain this particular model. So where he has he has compared this model based on different end users, where every end users might produce for say per se 4 kg, 6 kg, 8, 10, or 12. With respect to the rolling mechanism, what I mentioned, it can be the hand rolled or the machine rolled. And he has also included the solar intervention in the biomass dryer. Nitiraj, Yeah, could you? yeah. Thank you, Supriya. I hope I am audible. Yes, Nitiraj, can you please also switch on the video? Yeah, sure. Thank you. Yeah. Hello everyone. So as Supriya has already mentioned and Swati ma'am has also mentioned, that tea processing, when we look at different end users, they adopt different kind of mechanism and methodology. So based on type of dryer they are using, they might be using their own like a locally made biomass dryer, or they might be using LPG, or they might be using some electric dryer. Normally they use their room heater as dryer. And again, when it comes to rolling, they might be doing machine rolling or they might be doing hand rolling. And then their production capacity are also at various level. Like someone might be producing around 4 kg, then again someone might be producing 12 kg. So we try to understand for various type of end user, like their current scenario and what happens once this solar and biomass dryer intervention is done in terms of their net income or the profit. So as we see, like when their production capacity is low, normally they go for higher hand rolling only. They don't use machine for lower production capacity. So that's why we have used, I have marked as NA for this production capacity at 4 and 6. So I will not go the numbers one by one. So one thing we can see in all these type of dryers, like at when they are before the intervention, like when they are producing at very low capacity, like 4 kg, like normally they are at a loss actually if we calculate. They continue with the business because they don't calculate their own like manpower, their own labor cost, and like they feel that they are getting some income in terms of their own labor. But if in our calculation we have subtracted the labor, even if it's their own labor, so if we calculate in from a dead approach, then when they are doing at very minimum capacity without solar or with their existing dryers, then they are actually at a loss. And similarly, at when we go for a higher capacity, their profit gradually increases, as we can see with all these cases. But again, when it comes to the solar and dryer combination developed by SELCO, we can see that even at lower capacity, they are at a profit. This profit is actually after subtracting the debt they have to pay, the bank loan they have to pay, not the net profit. It's the actually surplus after the debt repayment. So even at lower capacity, they can get some profit, but when they produce at a higher like capacity at 6 kg, 8 kg, or 10 kg, which is ideal, which they should be aiming with this modified dryer. So their total
like profit like keeps increasing. So in all the scenarios, we can say that if we compare it with any baseline scenario and with the post intervention scenario, we can see a very good incremental like income incremental increase in their incomes. This calculation is per month, not annum. So every month their net income has improved after this intervention. Yeah, that will be all, I think. Thank you. Thank you, Nitiraj, for taking us through this comparative. Can I request Kakuli to also interact with our end user if he is able to join in? Yes, yes. Thank you, Supriya. So our end user Soilenda has joined finally. Soilenda, আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আৰু মাইকটো আনমিউট কৰি ল'ব দেই। ঠিক আছে। Hi. So we are introducing Mr. Silent Fukan, who is a small tea grower from Upper Assam area. He is basically based out of Tingkhong, Dibrugarh, Assam, and he has been running his factory from a very, very long time. He also exports some of his production to other countries, and सोइलेंदा, हम लोग आपके साथ अभी इंटरेक्शन थोड़ा स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पार्टिसिपेंट्स है जो बहुत एक्साइटेड है आपकी खुद की स्टोरी जानने के लिए। अगर आप थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे पाएंगे कि कैसे आपने ये पूरा काम स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया था, और जब आपने स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली कैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने देखा, तो वो थोड़ा आप अगर एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स को, देन वो उनको भी बहुत सारा आइडिया मिलेगा ऑन दिस होल सेक्टर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है क्लियरली, ब्रेक हो रहा है। काकोली सुन रहा है? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है अच्छे से, बोलिए आप। हाँ हाँ। नमस्कार सभी को, मैं सैलेंट फुकन हूँ डिब्रूगढ़ टिंगखंग से। मैं एक स्मॉल टी ग्रोअर हूँ। तो मैं हम तो टी ग्रोअर जो हूँ, मैं पहले तो मैं ये जो ग्रीन लीव्स बिक्री कर रहा था, जो बॉटली फैक्ट्री है उसमें मैं ग्रीन लीफ बिक्री कर रहा था। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि अभी से तकरीबन 15 ईयर्स का पहले का बात बता रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, हम लोग का जो ग्रीन लीफ का क्या होता है, हम लोग जो पत्ती बागान से तोड़ देता है उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। क्योंकि तोड़ने के बाद उसको अगर मैं फैक्ट्री नहीं भेज पा रहा हूँ तो वो उसका रेट ऐसा भी है। और एक बात है कि एक सेचुरेशन आया कि पत्ती का रेट बहुत ड्रॉप हो गया, इसे 2 रुपीज आ गया था। तो 2 रुपीज आ गया आप शैलेंद्र, सॉरी, आप अगर थोड़ा फोन को पास में लेके बात करेंगे, वहां पे बहुत सारा नॉइज आ रहा है, आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा है। और वीडियो शट करेंगे तो शायद बेटर साउंड आएगा। हाँ हाँ हेलो हाँ, बोलिए। हेलो हेलो, सुन रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, मैं वीडियो ऑफ करके मैं बोल रहा हूँ। यस यस, नो प्रॉब्लम, बोलिए। हाँ। तो क्या हो गया, तो ग्रीन लीफ का जो प्राइस ड्रॉप हो गया तो हम लोग का मतलब फाइनेंशियली बहुत तकलीफ आ गया। तो हम लोग सोचा, उसी टाइम पर सोचा कि कुछ अलग करना पड़ेगा। तो वो अलग क्या करे, तो हम लोग सोच उसी टाइम पर एक अवेयरनेस आया कि पत्ती बना के हम लोग बिक्री कर सकता है। मतलब उसका उस टाइम पर ग्रीन टी का एक अवेयरनेस आया कि ग्रीन टी सही होता है। तो ऐसे करके तो कोई बहुत सारे आदमी उसी टाइम पर ग्रीन टी बनाने के लिए शुरू भी किया। तो उसी को देख के मैं भी स्टार्ट हो गया, शुरू कर दिया। तो पहले तो मैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी करके मैं कर रहा था। कुछ इक्विपमेंट नहीं था, कोई नॉलेज भी नहीं था। तो धीरे धीरे मैं क्या क्या एक छोटा सा एक मतलब पेन लेके उसमें ही चाय बनाने का शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो लोगों को अच्छा लगा पत्ती, तो मुझे स्केल करना पड़ा। तो स्केल करने के लिए मैं क्या किया, एक मेरे लोकली मेड एक दायरा लिया।
एक मेरा फ्रेंड ने दिया मुझे। तो उससे मैं उसमें मैं पट्टी बनाने के लिए शुरू किया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या था, कोई टेक्निकली बहुत बढ़िया नहीं था वो टायर। तो क्या हो गया उसमें मेरा लकड़ी का था, बायोमास टायर ही था वो। तो उसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा मतलब ये लकड़ी चाहिए पर डे मुझे, ये क्या बोलो, 2 क्विंटल 3 क्विंटल इतना तो मेरा लकड़ी जरूरत हो गया। तो उसी हिसाब से मेरा कुछ लकड़ी का बहुत ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट आ गया। तो फिर भी मैं बना रहा था। उसके बाद वो बहुत सही नहीं था वो ड्रायर। तो इसीलिए मेरा प्रोडक्शन लॉस भी हुआ था, प्रोडक्शन क्वालिटी ड्रॉप हो गया। तो उसमें अगर क्वालिटी कमती हो जाता है तो उसमें मेरा रेट का प्रॉब्लम आ जाता था। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम का अंदर ही मैं काम कर रहा था। तो उसी बीच में मुझे सेल्को के साथ एक इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसका उसके लिए मैं 2 आदमी का नाम तो बोलना पड़ेगा। एक सेल्को सेल्को का सेल्को के साथ मेरा जान पहचान हुआ। तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे एक मतलब डायर का और सोलर का प्रोवाइड किया। तो वो जब जिस टाइम से मैं वो सोलर और डायर में लेके शुरू किया, तो उस टाइम से मेरा बहुत सारे मतलब ये वेस्टेज भी कमती हो गया। उसके बाद लकड़ी का जो रिक्वायरमेंट वो बहुत कमती हो गया। तो मेरा 1 घंटा का ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 केजी ही मतलब ये लकड़ी चाहिए अभी। तो ऐसा हो गया। जो 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 मेरा दिन भर का 3 क्विंटल का था ये लकड़ी का जरूरी, तो वो जाके मतलब 12 केजी तक आ गया। तो उस हिसाब से मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कमती हो गया। उसके बाद करेंट का भी मेरा ये हुआ था, मैं 7,000 तक मेरा मंथली करेंट का बिल आया था। लेकिन अभी जब मैं सेल्को ने मुझे सोलर दिया, तो उस टाइम से मेरा सोलर का करेंट का कॉस्ट, बिल का कॉस्ट मेरा कमती होके 1,000 का अंडर में आ गया। तो ये भी हुआ। तो उसके बाद जो डायर का जो सही हो गया, मेरा ड्राइंग सही होता है तो सब कुछ जब हो गया, तो मेरा ये जो प्रोडक्शन क्वालिटी का जो ये था ना, क्वालिटी क्वालिटी भी मेरा बेहतर होने शुरू हो गया। तो इसीलिए मैं रेट का भी, प्राइस का भी मेरा कोई कमती जो मैं पहले मिला था, कमती मिला था क्वालिटी के कारण, वो भी मेरा मतलब सोल्व हुआ वो भी। मैं अभी प्राइस भी बढ़िया मिलता है मुझे। तो यही है मेरा कहानी। ओके, तो ककली। थैंक यू। यस, सो शैलेंद्र, एक और बात पूछना था, क्योंकि आपने बोला कि आपका क्वालिटी अभी बहुत इम्प्रूव हो गया है। एक थोड़ा आप एग्जांपल दे पाएंगे क्या कि कैसे आपका क्वालिटी इम्प्रूव हुआ? पहले क्या क्या प्रॉब्लम हुआ करता था अगर अनइवन ड्राइंग होता है, और शेल्फ लाइफ कितना होता था, सो दैट हमारा भी ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि क्वालिटी और ये प्रॉपर ड्राइंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ। तो चाय का एक बात है, चाय चाय का सेल्फ लाइफ का बहुत ये है। क्योंकि चाय 1 साल, हम लोग जो चाय पीता है वो तो शायद कस्टमर को मालूम नहीं होता है, लेकिन 2 साल 1 साल पुराना चाय ही, आदमी को पीने को मिलता है। तो चाय चाय का सेल्फ लाइफ का बहुत जरूरी है। अगर ड्राइंग प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, ड्राइंग अच्छा नहीं होगा, तो आपका सेल्फ लाइफ को मतलब उसका लाइफ 2 साल नहीं टिकेगा, वो खराब हो जाएगा। वो पत्ती अगर खराब हो जाता है तो वो तो बिक्री भी नहीं होगा। वो उसका पहला है कंटामिनेशन, जो फंगस कंटामिनेशन हो जाता है। जो फंगस लगने से तो वो पत्ती आदमी को अब बिक्री भी नहीं कर सकता है और पी भी नहीं सकता है। वो एक बात है। तो पहला जो मेरा डायर था उसमें मतलब अनइवन ये ड्राइंग हुआ था। वो बढ़िया नहीं था। मुझे बार बार मुझे ये उसका दरवाजा खोल के मुझे जो उसका ट्रे होता है उसको उलट पलट करके रखना रहना पड़ता था। तो इसीलिए मेरा ड्राइंग बहुत बहुत तकलीफ था मतलब ड्राइंग का। तो इसीलिए मैं मेरा क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था मतलब। कभी कभी कोई बाई चांस मेरा अच्छा भी हो जाता था, सब कुछ सही हो जाने से। तो हर वक्त तो वो मैन्युअली करने से वो सही तो नहीं होता है ना। तो वो प्रॉब्लम आया था। तो अभी ये डाया आने से मेरा वो सब कुछ मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो गया।
ओके ओके। और थैंक यू। और ये भी जानना था कि अभी आप बोले कि आपका अभी प्राइसिंग बहुत अच्छा है, आपका मार्केट एक्सपांड हो गया है, आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है। तो अगर हम लोग बिफोर और आफ्टर का देखें, पहले का और अभी का, तो अभी आपका स्ट्रेंथ क्या क्या है और आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप क्या सोच रहे हैं एक्सपांशन के लिए, या फिर फ्यूचर में कैसे सोच रहे हैं नेक्स्ट डाउन द लाइन से, अगर हम लोग 5 या 10 साल के बाद देखेंगे तो आप क्या प्लान कर रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है कबले। तो मेरा ये अभी पहले तो मेरा चाय तो बहुत जगह पर बिक्री नहीं हुआ था। तो अभी मेरा अमेजोन में भी मैं अवेलेबल हूँ। मेरा खुद का ब्रांड से नहीं है, लेकिन मेरा नाम से कोई अलग ब्रांडिंग करके बिक्री कर रहा है। अमेजोन में भी मिलता है, तो वो रेगुलर होता है। तो अमेजोन में है, तो मुझे लगता है कि शायद क्वालिटी अच्छा है, इसीलिए अमेजोन में अभी रेगुलर है प्रोडक्ट। तो और एक बात है कि वो धीरे धीरे जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो सॉरी मार्केट बढ़ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली मैं तो स्केल करना ही पड़ेगा मुझे। तो अभी तो एक साल इस साल तो मैं 100% फोकस करूंगा कि जो मेरा मतलब जो अभी चल रहा है मार्केट, तो उसी को मैं मतलब स्टेबल करने के लिए कोशिश करूंगा इस साल। उसके बाद मैं अगले साल से मैं डेफिनेटली मैं स्केल के लिए मैं सोचूंगा। ओके ओके, थैंक यू। और थोड़ा सा मतलब आपके जो अभी बिजनेस है उसके ऊपर अगर हमको समझना है, तो आपका सीजन कैसा होता है, प्रोडक्शन कैसा होता है, या फिर क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा मार्केट है? आपने बोला अमेजोन है जो आपको स्ट्रेंथन करना है, या फिर जो लोग अभी के लिए आपका मार्केट है, या फिर जो कंप्लायंस होता है, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, क्योंकि ये फूड कैटेगरी में ही आता है। तो अ, थोड़ा उसके ऊपर भी हमको आप समझाइए, तो फिर हमारे जो बाकी इंटरेस्टेड एंड यूजर है या फिर कोई अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि कैसे स्टार्ट करना होता है, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, या फिर कैसा प्रोडक्शन क्वांटिटी, कैसा स्टार्ट करना होता है बिजनेस। हाँ, तो एक्चुअली मार्केटिंग के लिए तो डॉक्यूमेंट्स का जरूरी है ही है। जो गवर्नमेंट ने जो रिक्वायरमेंट उन लोग के रखा हुआ है, जो जो चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए, वो चाहिए, फैक्ट्री का लाइसेंस चाहिए, वो भी होने चाहिए। उसके बाद जीएसटी है। वो तीन बेसिक तीन मतलब डॉक्यूमेंटेशन होने से ही आप कोई भी जैसे भी मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि आप ब्रांडिंग नहीं करके आप B2B भी कर सकता है। B2B करने से आपको शायद आपका ब्रांडिंग का रजिस्ट्रेशन या इस कुछ नहीं चाहिए। आपका जीएसटी प्लस ये फूड लाइसेंस होने होने से आप कर सकता है वो B2B। तो मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए कोई भी अगर इसे हमारे जैसे प्रोडक्शन करके बिक्री करने के लिए कोई अगर शुरुआत करना चाहता है, तो वो जीएसटी और फूड सेफ्टी लाइसेंस लेके B2B शुरुआत करना चाहिए। बल्क में देने से ज्यादा अच्छा आता है। तो वो होने से क्या होता है, आपको पैसा भी एक साथ मिलता है। उसके बाद आपका साथ ही ज्यादा पत्ती निकल जाता है। आपको ब्रांडिंग का या मार्केटिंग का आपका एक्स्ट्रा पैसा आपका स्पेंड करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो जीएसटी, फूड सेफ्टी और फैक्ट्री लाइसेंस, ये दो लेके और तीन लेके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ओके। और अगर स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट का फिगर कैसा होता है, मतलब कितना कैसा क्या हाँ इन्वेस्टमेंट उनको करना होता है? हाँ हाँ। तो इन्वेस्टमेंट का ऊपर में मैं बोलने के लिए एक बोलना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट मेरा एक सिर्फ पेन था। पेन पेन तो समझ रहे हैं ना, जो जिसमें खाना यस बनाता है। हाँ, तो वही यस। मेरा इन्वेस्टमेंट था पहला। तो उससे भी कर सकता है, कोई बड़ा बड़ा मशीन लेके भी कर सकता है। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट तो अपना ऊपर में है। लेकिन लेकिन बात यही है कि आप क्या सोच रहा है बिजनेस के, ये इसको लेके, या ये क्या सोच रहा है, वही बात पहला बात है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बात बोलूँ, तो कोई 1,000 रुपया, क्योंकि ये ऐसा बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये काम करने के लिए। अभी जो ऑर्गेनिक चाय का जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना बढ़िया है कि आप 1,000 रुपया लेके भी ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब पैशन चाहिए, जो
मतलब कभी अप एंड डाउन होगा, कभी पत्ती खराब होगा। तो लेकिन वो नहीं, वो आप नजरअंदाज करके आपको अगर अच्छा पत्ती आप बनाएगा तो डेफिनेटली आपका पत्ती बिक्री होगा। तो वो जो धीरे धीरे जो आपका बिजनेस एक्सपांड होगा, तो आदमी को अगर आपका चाय पी के किसी को अच्छा लगता है तो वो आदमी आपको 10 मतलब कस्टमर आपको देगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे भी आप कर सकता है। अगर ये नहीं करके आप स्पीड करना चाहता है तो आपका थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप कर सकता है। इन्वेस्टमेंट का वही बात है। मेरा नजरिया से इन्वेस्टमेंट ऐसा ही होता है मतलब। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन, एकदम फाइनल क्वेश्चन हमारे तरफ से। अगर हम ये मिनी टी जो अभी इंडस्ट्री है उसके ऊपर देखना चाहेंगे फ्यूचर कैसा है, तो पोटेंशियल कैसा है? अगर कोई स्टार्ट करना है तो पोटेंशियल कैसा है, या फिर आप इतना एक्सपीरियंस है तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में? हाँ, तो उसके बारे में ककोली मैं एक ही बताऊंगा कि इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है इसको, क्योंकि सबको मालूम है कि केमिकल का जो खाना में हम लोग खा रहा है, केमिकल दे के, पेस्टिसाइड दे के जो मतलब कोई भी मतलब खाना जो बनाता है, उत्पादन करता है खेत, तो उसका धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। आदमी को मालूम पड़ रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो आदमी जा रहा है इसमें ऑर्गेनिक की तरफ या नेचुरल की तरफ जो पहले होता था। तो उसका बिजनेस कभी, मुझे नहीं लगता है कि कभी ये खत्म होगा या कभी कुछ मतलब डाउनफॉल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर उसके ऊपर में काम करता है तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है, 100 रुपया का भी चाय है और 1,50,000 का भी चाय है। तो कोई तो पी रहा है ना 1,50,000 का। तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि 1,50,000 आपको चाहिए या हमको चाहिए, लेकिन 1,000 2,000 का अंदर में भी तो हम लोग चाय बिक्री कर सकता है बढ़िया से। तो उसका हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। लोग अगर इसको थोड़ा मतलब सीरियस होके इसको करेंगे तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा एक बाजार होगा। क्योंकि मेरा अभी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं कभी इसका, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्ती बिक्री नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कभी। इस साल अगर मेरा 5 कुंटल का ये रिक्वायरमेंट है तो अगले साल डेफिनेटली मेरा बढ़ ही रहा है। मतलब कभी ये डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ही मैं उसके ऊपर में मतलब विश्वास रखता हूँ कि ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है और करने से होगा मतलब। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, आपने इतना एक्सपीरियंस शेयर किया। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहा। आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वेबिनार के एकदम लास्ट तक रहिए, क्योंकि आपके लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। एंड थैंक यू सो मच। आई नाउ रिक्वेस्ट नेहा टू कम इन। थैंक यू। यस, थैंक यू थैंक यू। काकुली, थैंक यू सैलंदा। सो सैलंदा, सैलन जी के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन है कि उनके अभी जो उनका बिजनेस चल रहा है उसमें कंपटीशन क्या है, उनको क्या लगता है उनके प्रोडक्ट के लिए क्या कंपटीशन है, कौन है, और ये जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हुआ है उससे वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे कंपटीशन के लिए तरफ से, या जनरली एक्सपेंशन की तरफ से। ये एक सवाल है उनके लिए। दूसरा सवाल ऐसा है कि जो मार्केट लिंकेजेस के बारे में वो बात कर रहे थे। टी फैक्ट्रीज में काफी लार्ज प्लेयर्स भी है, तो इनका जो B2B मॉडल है मार्केट लिंकेजेस का, वो कैसे क्रैक कर रहे हैं, क्या प्रकार का मार्केटिंग, अगर मिनिमम है तो भी क्या प्रकार का मार्केटिंग है। ये दो सवाल सैलन जी आपके लिए है। हाँ हाँ, थैंक यू। तो इसका कंपटीशन के बारे में मैं बोलने के लिए एक्चुअली मुझे अच्छा ही लगता है। क्योंकि थोड़ा सा कुछ ये भी लग सकता है कि ज्यादा बोल रहा है, ऐसा भी लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा इसमें कंपटीशन कोई नहीं है। कंपटीशन खुद का ऊपर में ही है। तो आप अगर अच्छा पत्ती बनाएंगे तो आपका चाय बिक्री होगा। क्योंकि आप सिंपल एक देखने से हो गया
कि बाजार में बहुत सारे फैक्ट्री है, सबका पत्ती बिक्री होता है। किसी को सेम पत्ते, मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। जब बीओपी बोल के एक चाय होता है सीटीसी में, जो बीओपी, कोई वो बीओपी बीओपी जो सीटीसी है उसका कोई 100 रुपया में बिक्री करता है और कोई 1000 रुपया में बिक्री करता है। उसका डिफरेंस क्या है? बीओपी शाही मतलब कोई बहुत बढ़िया बीओपी बनाता है, कोई खराब बीओपी बनाता है, लेकिन मतलब मॉडल एक ही है, मतलब बीओपी बीओपी है। तो ऐसा ही बात है। अगर आप खुद का ऊपर में मतलब कंपटीशन करेंगे, मतलब अच्छी पत्ती बनाने के लिए आप अगर कोशिश करेंगे, तो अगर आपका पत्ती अच्छे अच्छा होगा तो आपका कंपटीशन कोई नहीं है, आप खुद ही कंपटीशन अपने ऊपर कर सकता है। मतलब वही बात है, कंपटीशन तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें खुद 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 का कॉम्पिटिटर है। तो वो एक बात है। और दूसरा बात है कि जो लिंकेज का मेरा शायद मैं थोड़ा सा लाकी भी हूँ उसमें, कि मैं जितना भी मेरा कांटेक्ट है, सब कुछ मेरा सोशल मीडिया से ही मुझे मिला। मैं सोशल मीडिया में मेरा ऐसा भी नहीं है कि मेरा अपना कोई पेज है, कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, उसमें मैं फोटो वगैरह डालता हूँ और उससे मुझे कोई बायर्स मुझे कांटेक्ट करता है, उसका बाद में बातचीत करता हूँ, उसके बाद ही मेरा बिजनेस शुरू होता है। थैंक यू। हेलो। थैंक यू शेयर करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग आपका मॉडल है और डिजिटल मार्केटिंग का भी प्लान है। स्वाति मैम, टू क्वेश्चंस फॉर यू। वन इज, due to climate change, farmers are facing a lot of productivity issue. How can this technology help in adoption, for where the farmers will be able to look at the whole value chain for tea production for future? That is one question. Other question is, in your experience, what is the time required for tea factories to adopt to this solution? Like, are there initial batches that go waste in the beginning, or what is the time typically that everybody can account for? Yeah, okay. So I'll take the second question first. This dryer is easier to adopt, access, etc., but you need training. So what we normally tell people is that in your first few batches, please do not put high value products. Whatever little bit of learning you have to do, you please do it with any other low value product, like some other leaves or something, just something, so that you get to understand the controls, the settings, etc. That you all experiment with some other low value product, and then within about one or two batches you will understand what it is all about. I don't expect anything, but training is important. User manuals, training, all that is important. Then about the farmers, the issue is that we are talking about dryers, and we are talking about made tea from uh, leaves which are already plucked. Uh, but climate change affects the gardens more than production. Uh, so I would think that the consequences of climate change are that that there will be soil moisture changes, the type of pest attacks that come into your garden change, your productivity falls. Sometimes your entire crop is lost because of pest attack or insect attack and all these kind of things. And tea being a food product, it's the whole nature of all these small tea growers is that they're very averse to pesticides, etc. Fertilizers they may want to use, but pesticides they generally don't like. But their cost of tea production, they'll have to pay for irrigation, they'll have to pay for fertilizers, etc. So their cost of production goes higher, but they may not get an adequate price because of because the market is like that. So their profitability gets further eroded because of climate change. Got it. Thank you so much. Thank you so much for this insightful. Oh, there's another question that has come. Um,
champions who have taken loan from the bank. Since this technology will take some time to fully mature, has anyone faced any challenges in availing loans so far? Have we been able to unlock any loans for this, and have there been any challenges for unlocking loans for the end users? Swati ma'am, So if you this, can yeah, take this yeah. So question. this is a very new technology, and the first prototype is what Mr. Salan has been using. But we've had enough people coming and looking at it, and the general response is very positive. So the DPR which Nitiraj proposed, the work that is being prepared from the point of view of bank loans, etc. So we have not yet approached a bank for a loan, but I think the only barrier to the loan would be from other issues, not necessarily from the dryer technology. Whether the end user is bankable, whether he has, whether he's loan worthy and such things, not necessarily anything to do with the dryer. I think it's a pretty robust design that Silco Foundation and Gogo Innovation have developed together. Thank you so much. I think there are no more questions. Thank you, ma'am, so much for taking time out and participating in this webinar and really taking us through the process for tea processing. Thank you so much, Kakoli, Shailen, Selanji, and Gogoi ji also for giving us the insights that are required for us to start scaling this and really looking at this in a larger manner. Thank you so much. We will see you next Tuesday with another topic, another livelihood. Thank you so much.